आदमी क्यों क्लास में बैठा हुआ है, वो आदमी क्यों भीख मांग रहा है, वो आदमी रास्ते में क्यों चिल्ला रहा है, आप ठंडा लेके क्यों हिला रहे हैं। हमें एक बच्चा आता है 8 साल का, चाइल्ड लेबर लॉज बने हुए थे, दैट इज प्रोहिबिटेड, they are not allowed to do job, and even then openly वो वाइपर चलाता है, nobody is stopping them। ठीक है ना। एक आदमी किस तरह से करप्शन करके भाग जाता है, बैंक लूट के भाग जाता है। So therefore we have to try to find out the reason behind that, why the things are happening, corruption क्यों है, try to find out the reason। Whenever we talk about science means you must have to explore the reason behind that art, to know something। Science means to know something, you must have to know behind the activities। So therefore ये बात समझ में आ रही कोई भी, there is a problem, एक आदमी रोड पे सो रहा है, एक आर्ट है, find out the reason why somebody is sleeping across the road। पता चला कि जनाब he don't have shelter, oh he don't have the job, okay why he don't have job, why he don't have shelter। जब आप रीजन मालूम करते हैं तो हो सकता है कि there is a प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्रीज रन नहीं कर रही है, इंडस्ट्री शटडाउन हो गई है, पहले रोजगार था बेरोजगार हो गए। इंडस्ट्री शटडाउन क्यों हो गई है, पता चले ना पावर सप्लाई नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, गवर्नेंस कम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम गवर्निंग कर देंगे तो फैक्ट्री चलने लगेंगी, फैक्ट्री चलने लगेंगी तो आदमी फुटपाथ से घर में चला जाएगा और उसको नौकरी मिल जाएगी। बस What is it? सब पता होता है। Are you getting the meaning of this statement that economics is a science? जब आपको लगता है कि problems है, we always talk about the problems। I told you economics is the study of individual problems, you know, problems of household हो, individual market हो, individual firms हो, I talk about that। So therefore we always have a problem। डॉक्टर के पास उसको जाते हैं जब बीमार होते हैं, हट्टे कट्टे होते थोड़ी जाते हैं, डॉक्टर मैं बहुत अच्छा करता हूँ बीमार कर रहा नो, definitely not, definitely not। So we always talk about the problems in economics and then we try to overcome the problems by making policies, by applying policies। अप्लाई करते हैं, बनाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, ओवरकम करते हैं। पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाइड करते हैं, प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाइड करने का मतलब होता है उसके रूट काउज को अप्लाई करते हैं। आंख में दर्द हो रहा, आंख सूज हो रहा है आपका, तो पता चला आई ड्रॉप डाल दिया, नहीं आप डॉक्टर के पास जाके देखा, वो एनालाइज किया, आपके सिस्टम को देखा, उसने कहा आपके मेरे में मसला, आप ये चेक खा लें, आपका आंख की जो सुर्खी हो रही सही हो जाएगी। पता चला आंख में मसला नहीं था, मेरे में मसला। Root cause. We always try to find out the root cause, why there is a problem। So therefore, we always talk about this is what the meaning. For me, economics is a science as well as an art। When we talk about the Professor Robbins' statement that he says that it's a pedagogy, it's a pedagogy। Then we talk about this। So one more statement that is also given by Professor Alfred Marshall। अल्फ्रेड मार्शल की जो किताब थी, किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। द बुक ऑफ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। In his book he said that economics, सुनिएगा मुझसे, economics is a positive science, economics is a positive science, economics is a positive science, economics is a normative science, and economics is a social। Positive science, normative science, and a social science। But before dealing with the negative or normative, whatever is the social, we know the meaning of science, to explore something behind action। Is it? Anybody else? Any problem? No। तो लिहाजा आप ये देखेंगे एडम स्मिथ क्या कहते हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की जो किताब है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है एक पॉजिटिव साइंस है, इकोनॉमिक्स जो है एक नॉर्मेटिव साइंस है, इकोनॉमिक्स है एक सोशल।
Let's see what the meaning of positive, what the meaning of negative, what the meaning of the social. When we talk about the positive signs, my students, in positive signs, we deal all facts and figures. In positive science, we study all facts and figures. What is, I would say, what is positive? All facts and figures. आतिश अमीन साहब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं. The rate of employment in Pakistan is very high. Whatever the things are, either it's a positive or it's a negative, irrespective of that. What is exists? In short, you are the students of the university. So therefore, the rate of inflation in Pakistan is very high. We, being a Pakistani, we don't have our basic needs of rights. We don't have our basic rights in Pakistan. I mean, the rate of corruption in Pakistan is very high. Rate of population growth in Pakistan is very high. The foreign exchange reserves is very low. Our exports earning is very poor. Our imports is double source. Whatever we talk about, and of course, Zardari is the president of Pakistan. Of course, maybe after few hours, we may say that Ilani was the prime minister of Pakistan. After few hours, whatever the things that exist in the society, either it's positive or it's the negative. But we do focus on negative aspects because we want to improve that. We try to improve that. Then we make the policies according to, so that we may overcome that problems from the system. So therefore, जब भी हम देखें positive science में देखें, what is जो कुछ भी है सही है या गलत है, facts and figure. मैंने बताया ना facts कैसे लिख दिया आपने. This is what we talk about positive science. I say economy of the case, how the economy does work. वही बात है ना, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत है, एक्सपेक्टेड लाइफ जो है बहुत लो हो गई है, एंड सो ऑन. नो लाइफ सिक्योरिटी, आई मीन नो फूड सिक्योरिटी, नो हेल्थ सिक्योरिटी. इट मीन्स वेरी मच. So therefore, I'm not against anybody else. Just I'm here to highlight you the fact. Since I'm highlighting the fact, means I'm teaching you the positive side. Whatever the fact is. मैं बोल दूं नहीं कि आपके क्लास में नहीं है, आपके क्लास में बैठा हूँ, मैंने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे सर आप खराब है. So therefore, you are in the class. What is fact is that he is in the class. So therefore, whatever, I mean, he's going to explain more, I think. Positive science. So therefore, how the economy does work. How the economy does work. How the people behave. Rather, they should behave. Are you getting it? How the people behave. Rather, they should behave. लोग कैसे बर्ताव करते, हालांकि कैसे करना चाहिए था. रेड लाइट पे गाड़ी चला रहे थे पाकिस्तान. How the people behave. नहीं करना चाहिए. अभी मैं उस पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, नहीं करना चाहिए. But how the people behave, rather they should behave. Talking about the positive. मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? So therefore, whenever we talk positive science, we deal all facts and figures. Normative science हमेशा इसका vice versa है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? What is? यहाँ पे हम कहते हैं what should be, what ought to be, what ought to be. What ought to be, what should be, what ought to be. How the circumstances should occur. There should be no unemployment in Pakistan.
opinion expressed about the desirability of it. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझ में आ रही बात? बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं होना चाहिए। करप्शन है, करप्शन नहीं होना चाहिए। और XYZ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। आगे से पढ़वा रहे हैं इकोनॉमिक्स, इनको नहीं होना चाहिए। तो आपकी मर्जी है, मुझे तो हम सदन को भी गाली नहीं देते। How the circumstances should occur? सही बात तो ये might be, ये आपकी परसेप्शन है, आपकी परसेप्शन है, आपकी परसेप्शन है ना भाई। वही बात है, यहाँ से तो 6 नजर आ रहा है, उधर से 9 नजर आ रहा है। यहाँ से आप आ रहे हैं, आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है, मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं, बोर्ड थोड़ी नजर आ रहा है। पोजीशन के साथ साथ परसेप्शन बदल जाती है। आप रहा होगा चाय पीने का, हो सकता है इनका दिल चाह रहा होगा शरबत पीने, हो सकता है इनका दिल चाह रहा होगा नहीं कुछ नहीं मुझे नींद करनी है, हो सकता है इनका दिल चाह रहा होगा सर छोड़ो यार वनडे शुरू हो रहा है, मैं वो देखना है। I mean, we ranked our preferences, you know. I preferred tea over coffee. Somebody preferred cold tea. Somebody preferred something over XYZ. You know, हर आदमी का अपना taste different होता है, preferences different होते हैं, and then they demand the good answers according to. Then they rank their choices according to it. And when these things are doing perfect, कभी नहीं हो सकता। दुनिया की कोई एक इकोनॉमी बता दीजिए where everything is perfect. No. Are you perfect? Are you perfect? Who is perfect in this country? No. Nobody is perfect. ना कोई हुआ है ना होगा मेरे नबी के साथ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता, कोई इकोनॉमी इफेक्ट हो ही नहीं सकती। इसकी वजह ये कि इकोनॉमी में कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन होती है। अरे भाई इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है। यहाँ पे बैठे थे, चलो चाय पी कर आते। देखो चाय कैफेटेरिया में 2 चाय की डिमांड होगी। कैफेटेरिया में जैसे काउंटर में पूछते हैं या आपको चाय ले ले, मैं तो कॉफी लूंगा। क्या हो गया चाय का? आपका बिल 2 मिनट का भी नहीं है। अचानक जाते जाते गाड़ी मोड़ ले लिया, क्या हो गया आपको? अचानक सोचा भी नहीं था आपने की डिमांड बढ़ जाएगी, आपने सोचा भी नहीं था कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। इतना नॉन वॉलेटाइल, इतना वॉलेटाइल नेचर होता है आपका इंसान का, बिल्कुल पेट्रोल की तरह नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाता है। इतना वॉलेटाइल होता है आपका बिहेवियर कि विद इन नो टाइम यू चेंज योर बिहेवियर। I mean, nothing is. This is what an ideal that हम एक्चुअली डेविएशन चेक करते हैं। ओरिजिन से कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं आप? डेविएशन अच्छा इतना फर्क चेक करने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर देते हैं। समझ में आ गई बात? लाइन सेट कर देते हैं, स्केलिंग कर देते हैं, देन वी चेक कर डेविएशन। इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम से हम वो डेविएशन को मालूम कर लेते हैं फर्क की तरह। So therefore, let's see, don't you worry, as long as you are in microeconomics, I will teach you everything within customers. मैसेज पढ़ने का तो कानूनी हक है। So therefore, we talk about this one, the normative side, what ought to be, how the economy should work, how the economy does work. Are you getting me or not? Is it clear to you? So how the economy should work. यानी कि opinion express about the desirability of action, ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। Are you getting me? So positive signs में किसी economy का सब तो बताया मैंने आपको। We talk about the facts and figures, how the economy does work, how the people behave, how the economy is running. I mean, in Pakistan is very high, the rate of inflation is very high. ये सारी चीजें बात करते हैं। The food prices is increasing in Pakistan day by day. We are losing our lives, we are losing our hopes. Whatever we talk about the facts, we are dealing in the positive. You are in the class, it's positive sign, that is example.
This is 10:04. This is positive sign of fact. 10:04 हो रहा है ना? है. What is? Anything else? Right. And what should be? We talk about that should be and that should not be. Corruption नहीं होना चाहिए. लेकिन corruption होना चाहिए आप कहते हैं. पाकिस्तान में corruption नहीं है. नहीं होना चाहिए आपकी perception है. लेकिन one thing remember, I told you yesterday. I mean the last day we always talk about rational behavior in economy. If you remember that, I told that कि ये 4 quadrant होते हैं. First quadrant, second याद होगा आपको. Third quadrant and fourth. In first quadrant all values are positive. Yes sir. एक perception है. एक मतलब क्लियर करने के लिए हम इस तरह से बताते हैं कि इकोनॉमिक्स को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये we always talk about the positive aspect. Means that always think rational. अब खाना चढ़ा दिया, जल रहा है, आप उसी खुशबू अच्छी लगती है. जल रहा है, मुझे अच्छा लगता है यार. खाना खत्म हो रहा है, जाया हो रहा है, रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं. इसका मतलब ये कि ये मेंटली किसी को तबाह होते हुए चीजों को देखना अच्छा लगता है, खाने का जल जाना अच्छा लगता है, तो लैपटॉप लिया है तो अच्छा लगता है. तो अभी somebody is not rational. So we always have the rational consumer behavior in economics. Any problem? Well, my dear students, then we talk about the social sciences. Social sciences is nothing but it's a generalization about the human behavior. We talk about a generalized view about the society. Actually ये देखता हूँ, इसी मिसाल देता हूँ कि देखिए भाई, बहुत आसान सी बात है. What we talk about in the social sciences, we study generalized about the human behavior in general. How the society behaves in general, aggregate level. I would say for an example, मैं ये कहता हूँ, मैं आपका पूरी सोसाइटी का एक कंजम्पशन फंक्शन डेवलप कर देता हूँ. सुनिएगा और से. अब कंजम्पशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी है और कम होती है, किस तरह से आप अपनी कंजम्पशन को एडजस्ट कर रहे होते हैं. Generally, you know, your consumption is the function of your income. आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आशा रखेंगे, है ना? नहीं मतलब ऐसा नहीं कि तंदूर में मुंह डाल दिया, पहले 2 रोटी खा रहा था, मुंह डाल दिया, बना रहा डाला जा रहा है, मर भी निकलेगा. Doesn't mean that. Increase in consumption means, of course, quantity as well as quality. ठीक है ना? पहले बर्ड फ्लू खा रहे थे चिकन, अब अच्छा वाला चिकन खा रहे हैं. क्यों क्या? समझ में आ रही बात ना? So therefore, with change in your income, पहले छोटी गाड़ी में थे, बड़ी गाड़ी में चले गए, घर में थे, बड़े घर में चले गए, पहले लोकल कपड़े पहने थे, फिर ब्रांडेड पहनने लगे. With increase in your income, your consumption increase. Either quality, पहले आधा पेट खाना खा रहे थे, इनकम बढ़ गई. So therefore, anything could be that depends upon individual's needs, individual's preferences, individual's things. But of course, with increase in your income, your consumption will increase. Any problem? Any problem? No. One thing more, my dear students, one thing more. You see, मैंने कंजम्पशन जो है ना ऐसे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया. ठीक है, नहीं ऐसे परेशान. C is equal to C bar plus small c of y. जरा देखिए, एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है. ये x है, ये y है, ये 10, 12, 15 जो कांस्टेंट नंबर होता है. अंदाज़े का अलग-अलग होता है. मैं हर तरह से आपको जो तैयार करता हूँ. ये जनाब x और y पढ़ के थक गए हैं. वही ये बच्चों को कोई दूसरे वेरिएबल नजर आता तो परेशान हो जाते हैं. Nothing. This is what the simple linear equation. This is x, this is y, this is 10, 12, 20, 50. This is what the constant number. Nothing more than that. Yes, sir. तोड़वा देता हूँ मैं.
peaceful environment. The way this has happened, I do appreciate that. And देखिए मेरी जिम्मेदारी तो ये है कि मैं लेक्चर का देता हूँ. आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने सामने बहुत माहौल अच्छा बनाए. You see my dear, अच्छा एक बात है ना, एक छोटी सी बात. For example, देखिए मैं एक बात याद रखिएगा, ये मेरा पैटर्न है. Think about it. देखिए think like a man. जब तक आप सोचेंगे कुरान में जो कौमें तफक्कुर नहीं, जो कौमें गौर व फिक्र नहीं करती, जो कौमें सोचती नहीं, वो तबाह हो जाती है. तो सोचना जो है अक्लमंदी की मिसाल है, और सोचने से, कंपैरिजन करने से, सोचने से आपको एक अच्छा आउटपुट मिलता है. Think about it. You always think about something. इसलिए डियर, जब ये बात बताएं आप मुझे, अगर आपकी इनकम 0 है, इनकम नहीं है, खाना पीना छोड़ देंगे? नहीं, नहीं, नहीं. आपकी इनकम 0 है, वाई से लिखते हैं इनकम. आपकी इनकम 0 है, फिर भी कुछ ना कुछ तो ना, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ कंजम्पशन, सस्टेनेबल लेवल ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन को मैं 3 बातें शो करता हूँ. This is what your minimum level of consumption, whatever may be the level of income. Either it's 0, even it's 0, even then you consume something. You consume something. This is what your minimum level of consumption. उसकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल वैल्यू तो हो खा रहे हैं. आपने नहीं तो किसी ने तो सेक्रीफाइस किया है ना वो पैसा. I mean to say, either your income is even then you consume something. I mean this is what the minimum level of consumption is. टोटल कंजम्पशन में मैं बता रहा हूँ, टोटल कंजम्पशन में ये एक हिस्सा है आपका मिनिमम कंजम्पशन, और दूसरा हिस्सा है कंजम्पशन का. जब आपकी बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, दोनों को मिला देते तो टोटल कंजम्पशन हो जाती है. यही प्रॉब्लम ना. तो मॉडल बहुत कुछ कहता है. आप सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं जो 10, 12, 15 को कोई कांस्टेंट नंबर होगा, किसी वेरिएबल से रिलेट कर रहा होगा, किसी सोसाइटी के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. सिंपल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ कह रहा होता है वो. So this is what the minimum consumption. This is what your consumption that depends on your income. मिनिमम फिर इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, दोनों को सम किया. अब सोसाइटी में एक जनरलाइजेशन है बिहेवियर. सोसाइटी है, किसी सोसाइटी के कराची के लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर देखना चाह रहा था मैं. मैंने देखा कि पूरे कराची में मैंने कहा 5 लोग हैं. ऐसा चलते क्या ना, किसी चीज को रिलैक्स करना है ना, इस चीज को समझने के लिए, तो आसान तरीके से. कराची की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5 लोग. मैंने कहा यार आदमी 1, 2, 3, 4, 5, या ए इंडिविजुअल, बी इंडिविजुअल, सी इंडिविजुअल, डी इंडिविजुअल, ई, दीज आर द 5 पीपल लिविंग इन कराची. 5 लोग रहते हैं. ए आदमी ऐसा है कि वो कहता है कि अगर उसकी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है, 1 रुपए से बढ़ती है, तो उसका 70% खा जाता है. इसका मतलब किसी का उसका बिहेवियर है. एक आदमी कहता है मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं 80% खा जाता हूँ, उसका वो 20% खाता है. एक आदमी कहता है मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं पूरा जो है खा जाता हूँ, कुछ भी नहीं बचा पाता. इसका मतलब है उसकी अभी भी बेसिक नीड बहुत दूर है. एक आदमी है वो कहता है मेरी इनकम बढ़ती है मैं 50% खा जाता हूँ. एक आदमी ऐसा है वो कहता है मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं 60% खा जाता हूँ, 40%. हर आदमी का अलग अलग बिहेवियर है.
मैंने कहा कि कोई 70% कंज्यूम कर रहा है इंक्रीज इनकम का, कोई 80% कंज्यूम नहीं होता है ना। मैंने कहा कि ओवरऑल देखा गया, एवरेज ले लिया, पता चला कि एवरेज जो आ रहा 0.75 आ रहा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट एवरेज। तो कराची सोसाइटी में अगर लोगों की इनकम ऑन एन एवरेज 1 रुपये बढ़ती है तो सोसाइटी के लोग जो है 75% कंज्यूम कर लेते हैं। हर आदमी 75% कंज्यूम नहीं करा तो सोसाइटी का एग्रीगेट बता दिया बिहेवियर के। Got it? You got it? What I mean to say, my dear student, that generalization about the human behavior is nothing little question. ये बहुत मजेदार है, कभी मौका मिला तो मैं डिटेल में इसको करूँगा। Very interesting. इसके बेसिस पे बड़े रिसर्च करते हैं। So therefore, economic, positive science, economic is another science, as well as economic is a social science. Now come to the point of the definition of the professor of it. अगर इजाजत दे तो मैं इसको मिटा दूं। होमो की बर्बादी के बारे में ने भी क्या पूछा है? बोलो। वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान उनको और हुए सारे सही बात। क्या बात जब भी किसी कॉम में सबसे बात करते हैं इंडिविजुअल रिफॉर्म फॉर्म इंसान ठीक है ना, एक इंडिविजुअल को कलेक्टिव करते तो एक घर, एक माशरा, एक कौम मौजूद और वो कौमें उस वक्त तबाह होने लगती जब उनकी औलाद फेल में चला। आप बोलते कुछ हैं और एक्शन कुछ है तो वो कौमें तबाह नियत के तराने दिलों में हसमत आलम We are for you, we are not for you. They live here. This is your country. This is सब $97 billion स्टेट बैंक में रखवा दिया गया। पता है? Economics is nothing but the human behavior. Again, human behavior. देखा? नहीं that is but the human behavior. नहीं देते हैं, आप नहीं देते हैं, बहुत से लोग आप देते हैं, बहुत से लोग आप हैं उन्हीं की वजह से माशरे में अल्लाह ताला ने कुछ बरकतें रखी हैं। अच्छे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी जगह में रिक्वेस्ट में जैसा मैं बोलूँ मैं हूँ ऐसा आदमी तो फिर सफल हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, रियाकारी हो जाएगी। आपको बताऊं बहुत से लोग आज की सोसाइटी में जब उनकी सैलरी आती है ना, सैलरी से सबसे पहले गरीबों का हक निकालते हैं। घर वालों को देने से गरीबों का हक निकालते हैं। वो जितना भी निकाले वो निकालने के बाद फिर घर वालों को इसको हटा दो, ये गरीब 5%, 10%, 2% बचे। नाउ दिस इज योर पार्ट, दिस इज माय पार्ट। ओके दुनिया कुछ नहीं है। यस्टरडे की कल की बात है, जाने वाले हैं उनकी संडे को उनकी दो बातें मुझे बहुत हैरान हुई क्योंकि वालदा की इंतकाल हुआ था साथ में एक ही बेटा था उनका, दो बेटियां बेटा साथ आ गए थे। वालदा जो थी काफी एक्टिव खातून थी, वो कई काम तो उनकी आदत भी खातून की कम अज कम 3 सारे उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई, पहले से चला गया एक दिन नमाज पढ़ के उठी, कुरान ने बाद पढ़ के उठी तो जो पुराने जमाने की हमारी खातून होती है वो तालियां तो होती हैं और पान खाती है तो पान खाया उन्होंने, नमाज पढ़ के उठी, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ के उठी, पान खाया। किसी के यहाँ जा रही ऐसी बातें होती हैं पुराने लोगों से मिलते जुलते तो नहीं तो बहुत एक ही बेटा तुमने कहा कैसी अल्लाह ताला मुझे जो है पहले उठा लेना, मेरे बेटे को पहले मैं अपने बेटे क्योंकि सिचुएशन थोड़ी खराब थी बेटे मैं समझ गया वो बोल के उठी है और तो इसी तरह के she goes that
से मैं नहीं सुनता, आसमान बदल जाते हैं, उसके नाम से तराकी लोग। तो एक हफ्ता पहले मेरी आदत है, जब पता चलता है आप अगर कोई बीमार है, उसकी आयरत के लिए मिठाई निकाल दिया, अब उससे अपने लिए दुआ भी नहीं, मेरे नबी की सुन्नत की। तो मैं गया था, मैं अम्मा को लेकर गया, एक हफ्ता बैठा उनके पास, 12-13 दिन पहले। पहले 4 दिन पहले बेटी है, उसकी वालिदा उसके ख्वाब में आती है, कहती है पर्चे रख लो, और बेटी को कहती है पर्चे रख लो, और इतवार वाले दिन बेटे का नाम लेके कहती है मेरे पास आ जाएगा। रात को बेटे ने कहा संडे की रात, सैटरडे नाइट, संडे सुबह हुई, दीदी ने बात संडे स्टार्ट हुआ, बेटे ने एडमिट हॉस्पिटल उसके साथ फैमिली को बुला के, लेकिन आज वो मिल लो उनसे, क्योंकि सुबह 6 बजे मेरी ट्रेन है आज को, हैरान हो जाता, सुबह 6 बजे मेरी, मैं चला जाऊंगा, तो चलो मिल लेते हैं, क्या है, आप चलेगा, मेरे वाइफ भी चाहिए हॉस्पिटल में बाहर वेटिंग भी होता है, लॉन्च करके आता है, सुबह का 6 बज रहा था, हमने कहा चले कुछ चाय वाय लेते हैं, गए तो हुई रास्ते को 4 दिन आगे उसके बाद इतवार को फिर 4 दिन आगे खबर मेरे काम करता, तो मैं आधे वक्त लेकिन 2 दिन में जनाजा पड़ा, उनका चेहरा देख एक तो बच्चों को लाइफ भी अच्छे काम, मैं बार-बार हर सेमेस्टर के बच्चों को कहता हूँ अच्छे काम, दुनिया सब कुछ होती है, तो मेरी नबी पेट में पत्थर बांध के साहबा-किराम की जिंदगी आपके सामने, किसने करप्शन किया, किसने दुनिया को, किसने खाने को भी करती है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ, इसलिए सारे लोग ऐसे चीज हो जाते हैं, ताकतवर लोग ऐसे चीज हो जाते हैं, अमीर गरीब लोगों में शुमार होता है, प्रेसिडेंट करवा बचा लेता अपने बाप कुछ ऐसा कर लेता है, ऐसे तो बहुत रॉबिन्स पता है क्या देता है, रॉबिन्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स का साइंस, अब साइंस का मतलब समझना है ना भाई, तो मसला है नहीं करना, मैं किसी दिन बहुत फालतू टाइम होगा मेरे पास, दिल्ली चलाओ पढ़ाने का, तो मैं आपका इंट्रोडक्शन मेरा दिल्ली चला बंदी आज गपशप करते हैं, आरामखोरी करते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ओके साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, आगे कहते हैं विच स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर, इज इट, यानी कि इस साइंस में अब स्टेप बाय स्टेप देखें, अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इस साइंस में आप क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ओके साइंस, to know something, but you know something, which is studying human behavior, इस साइंस में हम कौन सी चीजें, we are studying the behavior of individuals, यही ना, we study human behavior, अब कुछ behavior को कैसे पढ़ते हैं, कहते हैं with the relationship between ants and scarcity of meat, इस behavior क्या है, with the relationship between ants and meat, यही है ना, आगे कहते हैं which have alternative uses, आगे हम उसकी बात, what we are studying in this science, what we are studying in this science, we are studying human behavior. And how we are studying human behavior? We are studying human behavior with the relationship between ants and bees. What's the meaning? Ants means target. Ants means your objective. Ants means your goal, your vision, your desire. यार मुझे ये खाना है, यार मुझे ये पहनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए, यार मुझे एमबीए करना है, मुझे पीएचडी करना है, इट इज इकोनॉमिक्स, what we have desire, economics is the study
of human behavior with the relationship between ends and means and objective and your desire and your target. Are you getting me or not? Yes. And means your resources. देखा आपने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी हो रही है, आपके ऑब्जेक्टिव है और दूसरी तरफ आपके पास रिसोर्सेज है। अगर ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज कम तो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता। हजारों ख्वाहिशें बहुत निकले मेरे यार मालिक, फिर भी कम क्यों? The wants, the needs are limited and ends are unlimited. ख्वाहिशात अनलिमिटेड ख्वाहिशात हैं, लेकिन मसला है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है। So therefore we cannot fulfill our desire. Why we fail to fulfill our desire? Just because we have limited resources. दिल चाहता तो है पिज्जा हट का पिज्जा खाने का, पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं है, we have alternative uses. बेकरी से पिज्जा खा कर कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल करता है, 25 रुपया नहीं है, कोई मसला नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, कोई मसला नहीं है, गन्ने का जूस अभी फिलहाल वही पियो। वो जो प्रेशर वाला आता है ना, वो भी प्रेशर वाला देखा होगा आपने जगह, एक यूं बड़ा ट्यूबवेल की तरह होता है, जगह जगह स्कूल कॉलेज के पास खड़े होते हैं, 25 रुपए का नहीं तो 5 वाला कोल्ड ड्रिंक। कार नहीं तो छोटी वाली कार, बड़ा घर नहीं तो छोटा घर सही। We have alternative uses. Why? The reason is that regular की जीन्स नहीं तो लुंडे की जीन्स। So therefore you know we have alternative uses. BBA करके MBA नहीं कर सकते, पैसा कम है, BCom करके MBA कर लो। Resources का alternate usage। One thing remember again, the efficient as well as the efficient utilization of available resources. I mean, you know, the resource हमारे objectives बहुत ज़्यादा है। Our wants are unlimited. Our resources इसको wants भी कहते हैं। Our wants, our desire, our objectives are unlimited, but our resources are limited. ख्वाहिशात लम्ब हैं, वसाइल महदूद हैं। There is a problem. This is one of the reasons why economic problem arises. This is why one of the reasons. Whenever we have shortage of resources, then economic problem arises. फिर लोग तरह-तरह के corruption में और we talk about that later on. But you know, you know the meaning of this. So therefore, what we say economics is a science which is studying human behavior with the relationship between ends and means. Of course, we are studying now the human behavior could be studied and the relationship between ends and means. मुश्किल है? Which have alternative uses. Any problem? No. My dear students, one thing more. Whenever we talk about the economy, we of course talk about the. One thing is economics. Economics actually talk about the economy. Economics concerned with what? Efficient allocation of scarce resources. Economics concerned with efficient allocation of scarce resources. We have a scarcity of resources, you know, we have shortage of resources, just I told you. Economics यही बताती है, जो resources आपके पास महदूद हैं, जो आपके पास महदूद वसाइल हैं, उस महदूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। आपको बेहतरीन इस्तेमाल आपके पैसे का ये है कि आप A ग्रेड ले लें। But we say that the efficient allocation of your whatever the resources you have, that should be optimized, should be efficiently, effectively, rationally utilized and allocated. Is it or not? So therefore, this is what the economics concerned with. Economics में बता देता यार resources का सही इस्तेमाल होना चाहिए.
इकोनॉमी कैसे getting me a lot. What economy is concerned with efficient allocation of resources. Economy is concerned with what to produce, how to produce, and for whom to produce. देखिए, सुनने मेरी बात आप. Economy is concerned with what to produce, how to produce, and for whom to produce. What to produce, how to produce. I mean to say, economics ने कहा कि resources का efficient utilization होना चाहिए. एक कहता है कि I mean to utilize those available resources efficiently, we must answer these three questions. If you have the answer of these three questions in your mind, so that you may utilize your efficiency. Are you getting me? Yes. यानी कि आपको A ग्रेड लेना है तो A ग्रेड लेने के लिए टीचर बता रहा है कि आपको लेक्चर बहुत गौर से सुनना है, आपको कोई क्विज़ेस मिस नहीं करना है, कोई असाइनमेंट मिस नहीं करना है, क्लास में पार्टिसिपेट करना है, तो ऐसा मुमकिन है कि आप तैयार. Just like that, economist says that, oh my God, this is not the reason why somebody is. Thank you very much.